We have with us Mona Ambegaokar, another vociferous voice and eminent theatre and TV artist with us. And cinema. And cinema. Sorry to. In fact, I have 3 international awards for my cinema performance. That's very fortunate that we have you with us. Tell me something about the upcoming elections. How is Bollywood taking up politics this time? I think as if they are pet dogs, as if they are following some master, as if they have been given a script which is terrible to follow, and as if they don't really care whether the country is broken up into many pieces, as if they don't care whether the minorities are being marginalized and being exploited, almost as if they are living in a bubble which is full of privilege. And that they are now kowtowing to the fascist forces which are in power, and it is terribly sad, and it's not just unfortunate, it's a shock. I mean, in the film industry we have always maintained that we are a mixed bag, you know, that every community, every religion, every language is represented by our industry, because it is the largest industry in the world. When I say the Indian film industry, that is so many languages from all over the country, north, south, east, west. And we have always maintained that we are a solid representation of every part of our country, but this is not so anymore. You know, suddenly it's about them against us. And there are people in the film industry like Anupam Kher, who apparently just tweeted saying that, you know, oh, the opposition wants to elect out the constitutionally elected government, but that is what elections are about. It is a constitutional instrument. The whole point of an election is to elect out a government or elect in another government, and a government can be represented by multiple parties. A government is not always just one single party. There have been coalitions. In fact, this government is actually also a coalition. So here he is maintaining that because you may not want to elect the same government again, that it is somehow unconstitutional. Somebody should tell Mr. Kher what elections are about, you know, really. Because if that is unconstitutional, then the very fact that in 2014 BJP was elected, that is unconstitutional too, right? By the same measure, right? You can't have different measures for different things. So yeah, it is very, very sad that in the industry there is a whole bunch of sycophants and quite simply bootlickers. So you are calling the people who are supporting the BJP government as sycophants and bootlickers? Sycophants, certainly. Some of them are bootlickers. Some of them follow the party diktat, whatever it may be. But, you know, they're all leaving. Sushma, what is her name? Miss Mahajan, who was our speaker, she's leaving. One of the only, you know, real stalwarts, Sushma Swaraj, is not contesting elections. So, you know, these, if BJP is voted into power, some of the most, let's say, people who and also let me tell you about Ms. Mahajan, she's one of the longest serving elected MPs. Okay, so she's been in Lok Sabha far longer than most of the people who are there. But she's not going to be fighting for elections this time. They are going to be a hugely depleted party. As it is, they lack talent. Okay, and now they're going to lose those who do have talent and who have performed, who have shown some sort of performance track record. So yeah, I am saying that those who are supporting a party or a figurehead brainlessly, without analyzing what has this person achieved, what has he done for the country in the last 5 years, jobs have tanked, economy has tanked, the GDP numbers are fake, they are false. Every kind of data has been fudged. Manufacturing has tanked. Our exports are finished. You know, people are on the streets today. The mobs are paid to go and watch these guys do their election rallies. If you don't know that, what else should you call? You have raised a very alarming situation, not only in the mainstream cinema, but also the parallel media. Of course, the cinema industry is just a representation of the country. We are not sitting in isolation. We are not, oh hello, we are not special people, we just put on makeup. That's the only difference, really. And they are paid insane amounts of money for doing a job which doesn't really save the country. Bhaiya, TV serial bana rahe ho, film mein hero ho, koi desh nahi bacha rahe ho. Please, you're not saving the country by doing this.
इनफैक्ट यू आर आप एक हिस्सा हमारी वेल्थ का उसके ऊपर पिंडली बना करके सांप की तरह कुंडली बना कर बैठे हो. यू आर टेकिंग अवे मनी फ्रॉम पीपल हु डिजर्व इट. यू नो द अमाउंट ऑफ मनी दैट स्टार्स मेक, they don't work 1/10 as much as that as the people who are doing. ये मेहनत ज़रूर करते कि बॉडी बनाते हैं और 6 घंटा कसरत करते हैं और उनका डाइट ऐसा होता है और वैसा होता है. बट दीज आर ऑल साइंस ऑफ प्रिविलेज कि आप 6 घंटा रोज़ कसरत कर सकते हो और इससे आपकी जीवनी पर, आपकी इनकम पे, आपका बिल पे कोई असर नहीं पड़ता. दिस इज़ अ साइन ऑफ प्रिविलेज. You know, so listen, I'm not running down my own com या my industry, but I do know that there is immense inequality here, immense inequality. I am going to be on stage in a couple of hours. पता हम मुझे कितना मिलेगा इसके लिए? मैं 4 शोज़ करूँगी, उसका टोटल आपको पता है कि कितना कमाऊँगी मैं? 5,000 भी नहीं कमाऊँगी 4 शोज़ का. आप जानते हैं ये स्टेज के एक्टर्स की हालत है. उसके एवज में अगर 4 शोज़ अक्षय कुमार कर रहा होता तो कितना कमाता? आई एम टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटी इन आवर कंट्री. इट्स टाइम टू फिक्स दैट. प्लीज़ फिक्स द इनइक्वालिटी इन आवर कंट्री. बाकी सब विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. That's a blasting interview we had, very short time we had. So this was one of the best interviews we had in the last 3-4 months related to Bollywood and the political scenario right now. Acha, one thing I wanted to ask, there are several signatories who have signed that BJP should not come to power. Just brief take on that. मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया है जो उन्होंने किया है. मैं भी मानती हूँ कि बीजेपी को अब सरकार में नहीं रहना चाहिए और कभी भी सरकार में आगे से नहीं आना चाहिए. इनके पास कोई पॉलिसीज़ नहीं है. वो हिंदू मुस्लिम करके हर बार अगर वोट जीतने वाले हैं तो फिर एजुकेशन पे कौन ध्यान देगा? हाँ, हेल्थ केयर पे कौन ध्यान देगा? विमेंस राइट्स पे कौन ध्यान देगा? वी नीड राइट्स नाउ. वी नीड राइट्स फॉर आवर चिल्ड्रन नाउ. हम कल ही बात कर रहे थे अपने प्ले में कि हम जहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ से तकरीबन आधे किलोमीटर की दूरी पर एक 8 साल की बच्ची का अपहरण हुआ, उसका गैंग रेप हुआ और फाइनली उसके टुकड़े करके उसको घर पर डिलीवर किया गया है इस बच्ची को. आप समझ रहे हैं? ये यहाँ, हाँ, ये सच है. आपको पता नहीं है? ये न्यूज़ के में आया हुआ है. इसके बारे में जो पुलिस स्टेशन में बहुत बड़ा 1000 लोगों ने धरना किया था, आज के पेपर में पढ़ सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो. आज संडे है ना, 7 तारीख है मई की. आप प्लीज़ पढ़ें, सॉरी अप्रैल की, और आप पढ़ें, ठीक है? तो अगर ये सब हो रहा है हमारे देश में तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहाँ है? इस पर कौन काम करेगा? हिंदू मुस्लिम करते रह जाएंगे आप लोग. हमारे बच्चों के शिक्षण का क्या है? मुग़ल साम्राज्य नहीं रहा हिंदुस्तान में तो फिर शिवाजी किससे लड़ रहा था? मतलब आप कोई भेजा इस्तेमाल करें. मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑलमोस्ट हास्यास्पद है. दिस इज वी आर बिकमिंग अ जोक अराउंड द वर्ल्ड. आवर एनवायरमेंटल लॉज आर बीइंग डेसिमेटेड. चुपके से इन लोगों ने CRZs बदल दिए हैं. कोस्टल रेगुलेशन जोन्स का क्लासिफिकेशन बदल दिया है. इसीलिए सडनली दे कैन किल ऑफ मैंग्रोव्स. They can build where forests were. Forests are being sold off to their cronies जो बीजेपी को फंड कर रहे हैं ना इनके ये इलेक्टोरल बॉन्ड से, which are totally non-transparent. just by the way, बहुत बड़ी साजिश है ये पैसा खिलाने की इन लोगों को, ताकि बाद में चल के ये इनके सारे निफेरियस डील्स को पास करते रहें. हमारे लॉज बदले गए हैं, हमारे ट्राइबल लॉज, हमारे फॉरेस्ट लॉज बदल दिए गए हैं, जिनकी बुनियाद पे हम अपने पर्यावरण के लिए झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे. वो ही लॉज बदल दिए गए हैं. हम किस बुनियाद पे अब लड़ेंगे? आप समझ नहीं रहे क्या होगा. और सांस आपको भी लेनी है. एंड नो वन कैन प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर यू. योर AC डजंट प्रोड्यूस ऑक्सीजन. ना, जस्ट बाय द वे आई एम डायरेक्टली एड्रेसिंग द प्रिविलेज पीपल जो AC से बाहर नहीं उतरते हैं. Only a tree can produce oxygen for you. Only a tree can make the land nutritious again. Only a tree can only आपको सिर्फ जो धरती से उगता है वही आपको खाना खिला सकता है. तो प्लीज़ यार, वेक अप. दिस गवर्नमेंट हैज़ पर्टिकुलरली डेसिमेटेड आवर एनवायरमेंटल लॉज सिर्फ अपनी धरती माँ के लिए. आपको माँ का इतना ऑब्सेशन है ना, गाय माँ, ये माँ, दुनिया भर की माँ. तो ये धरती माँ है ना, एक ही घर है आपके पास, दूसरा नहीं है. देयर आर नो अदर प्लैनेट्स टू इनहैबिट. एटलीस्ट इसके लिए लड़ लो यार. और बीजेपी, बीजेपी हैज़ रेप्ड द अर्थ. प्लीज़, वी डोंट वांट रेपिस्ट्स इन पावर. प्लीज़. थैंक यू. इसी बात पे एक छोटी सी बात मैं ट्रिपल आईटी की मैं बता दूँ.
जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जाके बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग कोई चीज़ ही नहीं है, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसी सोच रखता है तो उसके नीचे के तबके के लोग, हमारे साइंटिस्ट किसको लेके, किसको समझ के आगे बढ़ेंगे। दिस इज राजा चौधरी फॉर इन्वेस्टिगेशंस।